Hello everyone, am I audible? Can you please make me confirm, am I audible or not? Okay, thanks Naman for your response. So I will share my screen. My screen is visible to everyone. First of all, let me know, anyone have any doubt till DAX function? अब पावर क्वेरी के अगर पिलर्स की बात करें तो हमने पावर क्वेरी कंप्लीट किया है. Data modeling concepts, now we are able to know. We have idea about data modeling, what is data modeling, what, and also we covered DAX function. In DAX function, now you know DAX is able to make three types of calculation. DAX will be work in three functions, three different functions. For calculated column, for calculated measure, for your table. For table, what we will use? We always use DAX function. If we want any type of calculation in your Power BI. So how we are able to do that? With the help of DAX function. Because in Power BI, we do not have any formulas and function. We only have DAX function. Within our DAX, we have many functions. We have variety of functions. We have category of function. In different category, we have different function. For example, for logical category, we have logical function. For arithmetic category, we have basic mathematic function. So already we covered that part. Yes or no? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि डेक्स 95% हमारा कंप्लीट हो चुका है. लेफ्ट ओवर ऑफ योर रिमेनिंग 5% we will cover today with some visuals. So first of all, I want to discuss time intelligence function. जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम कवर करेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन. सो व्हाट इज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन? Anyone have any idea about time intelligence function? What is time intelligence function, guys? No idea. So the guy is there. Okay. So what is time intelligence function? I'll let you know first of all. टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हम उन फंक्शंस को बोलते हैं जिन फंक्शंस की हेल्प से हम कंपेयर कर पाए ईयर टू डेट डाटा, मंथ टू डेट डाटा, क्वार्टर टू डेट डाटा. What is year to date? What is the meaning of to date? And what is the meaning of month to date? Year to date and month to date function will give us year. For example, if I want to check year to date मतलब कि 2014 की 1 जन से आज की डेट तक मेरा कितना सेल्स हुआ. That is my sales for year to date. If I want to check month to date, so what it will give us? It will give me, what is the month? What is the current month? August. It will give me 1st August till today's date data. With the help of how we are able to check that? With the help of year to date, month to date. Also, if we want to check quarter to date, so for that also we have one function, that is Q2D. QTD, that is quarter to date. So when we talk about time intelligence function, so I want to tell you that whenever you work in any professional line, your time intelligence function is must. That already everyone know. So when we want to do comparison at that time, which type of comparison I am talking? कि last year to year, कि 2023 till 2024 हमारा क्या comparison था? So they all are coming in time intelligence function.
function. We use time intelligence function for that. So for time intelligence, what is our requirement? What is our need? We want one date column in our data. So for when you have multiple dates in your multiple files, if I show you this model view, we have multiple files for sales data, and in this sales data we have two columns. First date of month, that is also date column. Month, that is also date column. And if I show you, we have ship date, that is also date column. Also we have order date, I think. See, also we have order date column in this data. So we have multiple dates column in single file. Also चांसेस हैं कि हमारे पास क्या हो, दूसरी टेबल्स के अंदर भी क्या हो, डेट कॉलम का अवेलेबिलिटी हो कि रिटर्न में अगर हुआ है तो किस डेट को वो रिटर्न हुआ है. ज्योग्राफिकल में अगर आपको दिख रहा है ये व्यू का स्क्रीन, तो ज्योग्राफिकल के अंदर भी कि इस कंट्री के लिए ऑर्डर प्लेस हुआ इस डेट को. तो मल्टीपल फाइल्स में यहाँ पर चांसेस है क्या हो, मल्टीपल डेट्स कॉलम हो. तो मल्टीपल डेट्स कॉलम है तो हमारी क्या एनालिसिस हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज के लिए करेंगे. तो मैंने डाटा मॉडलिंग जब हमने कंसेप्ट क्लियर किया था तब मैंने हम यहाँ पे क्लियर किया था कि हर एक डाटा का क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेबल होता है. फॉर लाइक डाटा, सेल्स डाटा में हमारे पास क्या है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग. बट मेन चीज वहां पर क्या है, वी हैव सेल्स डाटा. Also we have other information, but main thing क्या है, we have sales data in sales table. In geographical table we have geography information. In product details information we have product related information. In returns table we have return product information. So for your date, where is our date lookup table? Where is our lookup table? Date lookup table? We don't have any lookup table for date. Let's think it. I already created one table, but right now we will all think we do not have this date table. So how you are able to create? One approach everyone know, with the help of Excel we are able to create calendar table. Yes, we will create one calendar table within our Excel. And after our creation of date table, we will upload it in Power Query. Yes. और एनालिसिस करने के बाद डायरेक्टली हम उसको अपलोड करेंगे इन आवर पावर बीआई कैनवा, और हम क्या कर देंगे, रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे. बट डाटा मॉडलिंग के कंसेप्ट में मैंने आपको क्लियर किया था कि वी आर एबल टू क्रिएट वन डेट टेबल इनसाइड आवर पावर बीआई. We do not have need of Excel. If we know DAX, every DAX function of Power BI, so we are able to do that. So for that, we will already discuss two functions. One is calendar and one is calendar auto. Can anyone tell me what is the difference between both the function, calendar and calendar auto? What is the major difference between both the function? No one. Okay. So calendar, let's check. Where is our date table? I show you. For date table, what we have, we use calendar auto. But what is calendar function use? Calendar function हमें क्या देता है, हमें हमारे डाटा में, हमारे एग्जिस्टिंग डाटा में जिस डेट से जो मिनिमम ईयर है और जो मैक्सिमम ईयर है उसका एग्जैक्ट डेट वो हमें देता है. और कैलेंडर फंक्शन में हमें क्या करना होता है, मैनुअली एंड डेट
और स्टार्ट डेट मेंशन करना होता है. इफ आई शो यू with the help of one example, click on this data table, new column. Sorry, we want table. So under modeling tab, we have option for table. Click on this table. Give name. I generally put calendar table. Calendar table is equal to same function जैसा उसका नाम हमने यूज किया वैसे ही फंक्शन. अब यहाँ पर आपको आर्गुमेंट मिले हैं. वी हैव टू आर्गुमेंट्स हियर. वन इज स्टार्ट डेट, वन इज एंड डेट. तो आपको क्या करना है, मैनुअली ऐड करना है. तो मैनुअली हम कब ऐड कर सकते हैं, जब हमने डाटा को अच्छे से एक्सप्लोर किया. बट इफ वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग डाटा, so always go with calendar auto function. But there is one limitation of your calendar auto function. Calendar auto function में if we have last day one single entry of 2014, for example we have 30 December 2023 data entry in our existing sales data. So what it will give us, it will give us complete year data of 2024 entry for 1 January 2024 as well as 2 January, 3 January, like this for every month it will showing us. So 365 out of 365 rows, how many rows we have? We want only one row we want. So that 364 row is unnecessary row in our data, unrequired data it will give us. So for that we have one solution, that is filter, that we already discussed. Yes, but for you, for your revision, we will do it again, because right now we are discussing time intelligence function, and they both are time intelligence function, calendar as well as calendar auto. So for calendar started, as I always suggest you, always cross check your data, explore every column, every file of your data. Whatever your client will give you, explore it in much details. तो ताकि आपको यूज करने की नीड ही ना हो कैलेंडर ऑटो फंक्शन. अगर आपने डाटा को अच्छे से एक्सप्लोर किया है तो यू हैव आइडिया अबाउट दी हाउ मेनी इयर्स ऑफ डाटा योर क्लाइंट विल गिव यू और गिविंग यू. यस, स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा. बट इफ आई यूज कैलेंडर ऑटो फंक्शन, दैट आई ऑलरेडी सिंपली डिलीट इट. तो कैलेंडर फंक्शन मैंने आपको दिखा दिया, इसका यूज वी ऑलरेडी कवर्ड. एंड हियर इज द टेबल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ योर कैलेंडर ऑटो. नाम उसका क्या दिया है, डेट टेबल कैलेंडर ऑटो. इफ आई शो यू टेबल ऑफ डाटा ऑफ योर, क्या किया था हमने, टेबल क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ डेट्स. टेबल में हमारे पास कितने कॉलम है, वी ओनली हैव वन कॉलम, दैट इज डेट. अब अगर हमारे डाटा में हाउ मेनी इयर्स ऑफ डाटा वी हैव इन दिस डेट कॉलम, टिल 2014. We have 2016 data. Yes. So 2014, 15, 16. We have 3 years of data. So how we now everyone know how we are able to create date in our Power BI with the help of DAX function. Anyone have any doubt about calendar function and calendar auto function? Yes, please make me confirm if anyone have any doubt. In today's session, we are not going in much details for these two functions because we already covered in data modeling concept in much detail.
Now it is clear to everyone how we are able to create calendar table in Power BI. Only use this function calendar auto and simply hit on enter. It will give you table related to your existing data. Whatever year of data is present in your existing data, it will directly give you in the form of table. कैलेंडर फंक्शन में आपको मैनुअली ऐड करना होगा. कैलेंडर ऑटो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ऑटो डिटेक्ट करता है. Yes guys, fast. If anyone have any doubt, so make me confirm. Yes. बलू यादव, अभिनय, ऋतिक, सीरत, श्याम, clear to everyone here. Okay, good. So okay, so what is our today's agenda? In our today's agenda, so I want to create one more table, one more date table, but with different approach. Not with the help of calendar, not with the help of calendar. We will use both the function, but in different way. With the help of variables. Variables हमने already cover किया है class में, yes. So with the help of variable, how we are able to create table. That I will show you in today's class. That is the main agenda of today's class. So from where we are able to create table, under modeling tab, we have option for table. So click on this new table icon. So according to our requirement, what I want one common table. For why common table? Because we have multiple date columns in multiple files. तो हमें क्या चाहिए, एक lookup date table चाहिए for that. But not like this calendar auto date table. Date table, calendar date table में सिर्फ हमारे पास क्या information मिला? We only have idea about how many years of data we have in this existing sales data. But मुझे उसके साथ कुछ extra information भी चाहिए. So how we are able to extract this type of information? Let's see us. So give name according to requirement. I want calendar table as in my lookup table. So give it name proper. Now what I already told you, I just 2 minutes before I told you, I make one date table but with different approach with the help of variable. So I want to declare one variable. So can anyone guide me how we are able to declare variable within DAX? Yes, what is the syntax for variable declaration? What is the step for variable declaration, guys? Var. Yes, remember to everyone. Var. And what is the my variable name? Minimum year. I want minimum year. क्योंकि कैलेंडर ऑटो हमें क्या देखता है, जो मिनिमम ईयर है वहां से लेके मैक्सिमम ईयर तक का डाटा वो हमें दिखाता है. तो मैंने अपने वेरिएबल का नाम क्या लिया, उसी से सिमिलर किया. वेरिएबल इज इक्वल टू मिनिमम ईयर. In this variable, I will use one more DAX function, that is year. Everyone know what is the use of year? With the help of this year, we are able to extract year from date. If we have date column, so we are able, and our requirement is only for year data. So with the help of this year column, we are able to extract. Also, we are able to make one more new column. We have month column, we have date column, we have year column. So with the help of this year column, we are able to create one full date column. So that is the use of your year DAX function. So what is my requirement? I want minimum year. So I'm looking for minimum. Minimum for which column?
we have order date in our sales data. So I select it, bracket close, declare another variable maximum year. This time I am looking for maximum year. मिनिमम ईयर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. नाउ आई वांट फॉर मैक्सिमम ईयर ऑल्सो. मैक्सिमम ईयर के लिए भी सेम ईयर फंक्शन वी विल यूज. डेट, डेट के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम फंक्शन यूज करेंगे बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम. कॉलम रिमेन सेम, ऑर्डर डेट, select it, bracket close. Now once you done with it, put your return statement. Why return statement? That we know already. Return statement is completely independent of your variable. Whatever declaration, whatever thing you declare with the help of variable, that is completely different, completely independent from your variable. So return. Now what is my requirement? I want one date table, but with different requirement. If I only want date column, so for that we have two functions. One is calendar. If we aware about our data, existing data, if we do not aware about our existing data, so for that we have calendar auto function. But what when we have multiple requirement, I want quarter column, I want month column, so for that variable is required. That is the use of your variable. So see how we are make the use of these variables. So under return statement, I want add column. वेरिएबल तो मैंने डिक्लेयर कर दिया. अब ये वेरिएबल मुझे क्या देंगे, इस ऑर्डर डेट का मिनिमम ईयर दे देंगे, इस मैक्सिमम फंक्शन और ईयर फंक्शन की हेल्प से मैक्सिमम ऑफ ईयर दे देंगे. बट दैट इज नॉट माय रिक्वायरमेंट. I want something else. If I want that, I use simple calendar auto function. So what is my other requirement? I want some extra column. So for that extra column, I will use one more dax function. We will use one more function, one more dax function, that is add column. Now let me know what is the use of add column. हर डेक्स फंक्शन का जो नेम होता है वो सिमिलर होता है उसके यूज केस से. अब ऐड कॉलम नेम से आपको क्या पता चल रहा है कि यूजफुल है अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है. तो ऐड कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट कंप्लीट कोड, देन आई विल गिव यू डेफिनेशन फॉर दैट. So under add column, I want filter also because I want to apply filter. बिकॉज जो टेबल मुझे चाहिए उस टेबल के अंदर जो मेरा डाटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए मिनिमम ऑर्डर डेट से, और सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए मिनिमम ऑर्डर डेट से और लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम ऑर्डर डेट से. दैट्स व्हाई आई विल यूज फिल्टर फंक्शन हियर. अब ये तो हो गया, बट ये फिल्टर मैं अप्लाई किस पे कर रही हूँ. वेरिएबल तो मैंने डिक्लेयर कर रखे हैं मिनिमम ईयर के लिए भी मैक्सिमम ईयर के लिए भी, बट मेरे पास कुछ कॉमन टेबल तो होना चाहिए. कॉमन टेबल मुझे कौन सा फंक्शन देगा, विच टेक्स्ट फंक्शन विल गिव अस कॉमन लुकअप डेट टेबल, calendar auto, because I am not aware about my data. That's why I will use this calendar auto function. After, अब वैल्यू में हमने क्या पुट कर दिया कि हमें फिल्टर करना है इस टेबल को. ये एज एन हमारा वैल्यू बिहेव कर रहा है क्योंकि हमने इसको यूज किया. इफ आई हमने इसको यूज किया वैल्यू की जगह पे. टेबल में हमने क्या रेफरेंस दिया, कैलेंडर ऑटो. अब फिल्टर एक्सप्रेशन वो पूछ रहा है कि व्हाट यू वांट टू फिल्टर. फिल्टर ये तो उसको पता चल गया डेक्स फंक्शन को वी वांट फिल्टर ऑन कैलेंडर ऑटो टेबल, बट व्हाट which type of filter we want. I want year, date, date,
ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ईयर। मिनिमम ईयर हमारे पास क्या है, टेबल को ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। एंड व्हाट आई वांट, ऑल्सो आई वांट ईयर, डेट, इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ईयर। मैक्सिमम ईयर के लिए भी हम अब हमने क्या फिल्टर अप्लाई किया, अब हमने क्या यूज किया, इन वेरिएबल्स को यूज किया अपनी टेबल क्रिएशन के लिए। टेबल क्रिएशन के लिए हमने क्या, कौन सा फंक्शन यूज किया, कैलेंडर ऑटो। बट फिल्टर हमने क्या अप्लाई कर दिया कि जो हमारा टेबल क्रिएट होगा वो किस नाम से होगा, ईयर डेट। बट ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मिनिमम ईयर से, किसकी मिनिमम ईयर से, ऑर्डर डेट की मिनिमम ईयर से। और मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, मैक्सिमम ईयर ऑफ ऑर्डर डेट। दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट when you start to do practically 1 2 3 times, if you do practically, so it will make your habit, आपका आदत बन जाएगा, आपको इजी लगेगा once you make it handy. After this I will stop my filter. अब फिल्टर का काम क्या होगा, स्टॉप हो गया। बट स्टिल एड कॉलम फंक्शन आर देयर, add column is my dax function and still it is there. So what I want year column, year in my table. So for that I will use year name. अब add column क्या करा रहे हैं, उन कॉलम का नेम हम मेंशन कर रहे हैं जो हमें ऐड कराने हैं अपने इस कैलेंडर ऑटो टेबल के अंदर। तो आई वांट ईयर कॉलम। एंड जब भी टैक्स फंक्शन हम किसी भी फंक्शन या डेक्स एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो कैसे उसको शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स, ईयर डेट। So that is the first column that I want. After it, I want also quarter column. I want also quarter column in my table. बिकॉज जो मुझे एनालिसिस करने है वो मुझे क्वार्टर वाइज करने है, जो कंपैरिजन मुझे करना है वो क्वार्टर वाइज करना है। तो दैट्स व्हाई आई विल ऐड वन मोर क्वार्टर कॉलम, क्वार्टर, बट विद alias name q. I only show q and in which format I want, क्वार्टर तो मुझे चाहिए बट किस फॉर्मेट में चाहिए, इन इंटीजर की फॉर्म में, फॉर्मेट इंट फॉर्मेट। किसको फॉर्मेट करना है, डेट कॉलम को। सॉरी, और यहाँ पर क्या खत्म होता है हमारा, यूज ऑफ दिस एड कॉलम फंक्शन। Why it is showing error to us? Just a minute. Year, date, maximum year date, quarter, double quote, Q and int format, bracket star, date,
One bracket is for date and one bracket is for format. You can enter. And the table. Why it should give me error? One bracket for this date and one bracket is for this format. Just a minute, guys. टेबल मिनिमम ईयर फर्स्ट वेरिएबल का नाम हमने मिनिमम ईयर रखा उसके लिए हमने ईयर फंक्शन के साथ यूज किया मिनिमम डेक्स फंक्शन का देन मैक्सिमम ईयर वेरिएबल नेम फॉर दैट वी विल यूज दैट order date then in return statement order return statement add columns. Oh, we will use multiple times add columns. That's why we use this error. And remove this bracket also. Add columns, filter. Then for filter calendar auto, year, date, minimum year, and less than maximum year, and year date, quarter, and int format, date. You can add why it will give us error. फिल्टर फंक्शन को हमने स्टॉप किया यहाँ पर आफ्टर मैक्सिमम ईयर देन ईयर ईयर डेट क्वार्टर and int format date why this is a error. We want one more that is for add column. Yes, int format. If I rewrite this function, guys, try it in your system. Don't know why it is showing error because syntax wise it is absolutely correct. Anyone try it in your system and let me know fast. Yes, try it fast and let me know why it is giving us error. Maybe it will showing for me only. For you it will work because syntax wise it is absolutely correct.
and let me check it. If I check it, right now it is showing nothing. Just a second. I also try it in my system once again. But syntax wise, it is completely right. Add column filter. Filter on what? Calendar also. Right. And for table expression, we will use year, date, simple date, colon, we will put it. Bracket close, greater than or equal to minimum here, minimum here, and here, date, here, date, less or equal to maximum use. Premium we will use also. So I put date. Now bracket close date. Put comma. And now what I want, what is the use of add column? I want column. One column is with year name. I want in my data. Year, comma. What is the format of my column? Year date. Year function we will use for that. So date we will use date function. There is a expression. And second column what I want quarter. Quarter expression क्या होगा इसका? Expression 2 and combine करेंगे हम इसको किसके साथ? Formatting के साथ. So number what I put format here. Format that function as a value. What I want value from date. So don't know why it is giving us error here. So it yes everyone. किसी ने किया इसको प्रैक्टिकली? ऋतिक, ज्योति, तीरथ, बल्लू यादव. आप में से साथ के साथ प्रैक्टिकली कौन करता है? ज्योति, you are doing practically. Guys, at least let me know if you are doing or not. If you are not doing, so tell me no. We are not doing practically, ma'am, right now. So for right now, you copy this code in your notepad. Note it in your notepad. Okay. So note it in your notepad, everyone. I will show you.
Yes, everyone, note it in your notepad. And try it in your system, and it will also, if it will give you error, so in our next class we will discuss. Note it, everyone. Also try it. I tried again after the today's class. Why it will give us error? Because from my side everything is right. For this single parenthesis, it will give us error. Don't know why. We'll go back after two brackets, one more bracket for add column. Okay, just now I was able to know that. After it, I will put local name. What I want as एक आर्गुमेंट हमने छोड़ा था यहाँ पर, दैट इज क्यू. हाँ, अभी नहीं दे रहा है. ठीक, दैट इज नाउ इट इज वर्किंग. वी डोंट एंटर. ठीक, now you are able to see this date table in your Power BI, and also the name on your right hand side under data. We are able to check this table. तीन कॉलम हमने क्या किए थे, ऐड किए थे. वन इज ईयर डेट, वन इज ओनली फॉर ईयर. डेट कॉलम आपको किसने दिया, आपका कैलेंडर ऑटो फंक्शन में. यस, यस और नो. अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो. ज्योति, तो डेट कॉलम हमें दिया हमारे कैलेंडर ऑटो फंक्शन ने, बट कंडीशन क्या थी उस पर, वो स्टार्ट था मिनिमम ईयर. मिनिमम ईयर था हमारा 2014 और लेस देन था हमारी मैक्सिमम ईयर. और व्हाट इज आवर मैक्सिमम ईयर, आवर मैक्सिमम ईयर इज 2016. दैट आई ऑलरेडी शो यू विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर ऑटो फंक्शन. In for this date table I only use calendar auto function, and that calendar auto function, what it will give us, it will give us data till 2014 till 2016. 3 years of data it will give us. तो ये फर्स्ट कॉलम आपका वहां से जनरेट हुआ. ये नेक्स्ट टू कॉलम, इन टू कॉलम्स के लिए मैंने क्या किया था, वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ताकि मुझे मेरी एक डेट टेबल के अंदर आई वांट एक्स्ट्रा कॉलम. If our requirement is that we want multiple columns in our date table, so always do that. Create variables for your table, for your date table according to its requirement, and use it with the help of filter, add columns according to your need. So what is my need? I want year, one separate column. So for that, year कहाँ से extract करना था, from year date. Where is my year date function? Year date हमने क्या किया था, अपने फिल्टर में यूज किया था कैलेंडर ऑटो फंक्शन में. So that's why I will put here year date. Then I want one quarter column. In which format I want? I want Q. Then 3 int. Int मेरा क्या था, number. I want date quarter in number. So Q3, 3 from int date and Q I add. Combination of Q and 3 is equal to Q3. So that's how you are able to make extra column within your date table. If you want month, so add one more column and give format according to for month. You have need to do, instead of this Q, you will put 3 within double quotes. So that's how you are able to make extra columns and you are able to add extra columns in your date table. So clear till here?
आपको बहुत ही ध्यान से डेक्स के अंदर फंक्शंस को यूज करना होगा। अभी आपने देखा सिर्फ मैंने एक आर्गुमेंट मेरा रह गया था, उसी के कारण क्या दे रहा था, वो एरर शो कर रहा था, बिकॉज वहां पर एज अ लोकल नेम हमने क्या किया था, कुछ भी मेंशन नहीं किया था। if you want the why we need dax function, so that is completely a different way of thinking. If you think excel is easy as compared to this dax expression, so you make your table inside your excel with the help of excel functions and upload it in power bi. And after, once you create your calendar table, wherever you create inside your day excel or inside with the help of dax function, wherever you create. So once you create your calendar table, your job is not complete. So now go to model view tab and create the relationship. Now we have this calendar table as an our date lookup table, because एक डेट टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, वो हमारा क्या था, उसमें हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं था जितना हमारा क्या है इस टेबल के अंदर है। So now I want to break this relationship from this date table and I want to make this relationship with this calendar table. Yes, if anyone have any doubt, see how easily we are able to make the use of these variables. तो हर रिक्वायरमेंट के लिए क्या होगा, आपका ये कोड सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, इसको आप अपने नोट पैड में नोट कर लीजिए और आपको सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉलम दैट यू वांट आपको ऐड करना है। इफ यू वांट ईयर, पुट ईयर, इफ यू वांट क्वार्टर, पुट क्वार्टर, इफ यू वांट मंथ, तो फॉर मंथ पुट मंथ, एंड फॉर लोकल you mention NMM 3 times, M for month name. So that's how you are able to create your complete fully informative date table inside your Power BI. If anyone have any doubts, so please let me know. Otherwise, unmute yourself and say yeah, no doubt. Then we will move towards our next function. Okay, I will also create one one relationship between this date and this older date. हमारा क्या रिलेशनशिप हुआ है, मैनी टू वन, बिकॉज कैलेंडर टेबल में आपका हर एंट्री क्या है, सिंगल एंट्री है, बट आपकी सेल्स में क्या है, एक सिंगल डेट पर क्या हुआ है, मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव मैनी टू वन रिलेशनशिप नाउ। Now if you do not have any doubt, so still 7 minutes is left, but I want to give you one overview regarding one DAX function, that is your year to date and month to date. ईयर टू डेट और मंथ टू डेट का ओवरव्यू मैम आप कैसे समझेंगे इसको, कि अगर आपको कंपैरिजन करना है, वेयर एवर यू वांट टू डू कंपैरिजन बिटवीन टू डेट्स, so at that time we will use this DAX expression, that is year to date and month to date, that we will discuss in our next class. If we have 7 minutes, so I will show you once. So I will create one measure for that. Okay, so in the data table, I will show you one measure for that. ईयर टू डेट के लिए हम एक चेक कर लेते हैं, ताकि कल से नेक्स्ट क्लास से हम अपना विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर पाए। तो सेल्स क्वांटिटी ईयर टू डेट मुझे कंपैरिजन करना है, सेल्स क्वांटिटी ईयर टू डेट, सेम नेम मैं यूज कर रही हूँ। एंड कभी भी आपको जब
ईयर टू डेट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, so you are not able to use it separately. Always use calculate function for that. Calculate what I want to calculate. I want to calculate sum of sales quantity. Sum of sales quantity I want. Quantity. So data quantity. You have to close comma. What I want year to date function. So dates YTD. We have function name dates YTD. किसके बिहाफ पे आपको किसके बिहाफ पे आपको चेक करना है आपको ऑर्डर डेट और calendar date also we are able to put if I click on this calendar table, so we have calendar table for that. Calendar table ब्रैकेट क्लोज. फिल्टर आपका ऑप्शनल है. अगर यहाँ पे आपको चेक करें आर्गुमेंट में, जो आर्गुमेंट आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शनल. सो दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस एंड हिट ऑन एंटर. Column row number in table it cannot be found or may not be used in this expression. Okay, so I will use another table for that. If I use it, so that it will be okay. So that is our measure for sales quantity year to date. So now if I show you with the help of one visual, so let it, I'll show you. Remove this visual. Also remove it. Also remove it. Now I take one visual and put it where I put there. I will sum of sales quantity. That is my sum of sales quantity. Is accepted and sum of my calendar date in the calendar date. Calendar table. Okay, that is my calendar table. So I put this date inside date in y-axis. So see, now you are able to see. And if I put my measure for year to date inside y-axis, instead of count of date, I put order date. Why did you do it? I put only year to date. Our next session is at 13, so please round up the session on time. So, okay, if I remove this, and I put where in my calendar table. So see, now you are able to see your. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक सितंबर की सेल्स है वो हमारी ऑर्डर डेट के कंपैरिजन में कितनी हुई है, ऑर्डर डेट कितनी हुई थी, और हमारी ईयर टू डेट में आज तक हमारे कितने सेल्स हुए. दैट आई विल शो यू इन नेक्स्ट क्लास बिकॉज we do not have much time now. I will stop my screen. So bye everyone.
If anyone have any doubt, we will discuss it in our next class. Aditi ma'am, you can. Hello, am I Yes, audible? yes. You may leave this session and join again. Okay, sure. Yeah.